Welcome back. Now, operators के बाद another strong aspect of VHDL is attributes, right? And attributes they basically add to the flexibility of coding. ठीक है? आपके हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में इट्स ऑलवेज कंस्ट्रेंट, जैसे मैं कल भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि you have a constraint कि whether आपका कोड synthesizable है या only it is simulatable. So it is difficult to code in VHDL. तो जितना मतलब the amount of flexibility आपको अगर मिलती है किसी चीज़ से, so you should exploit that, and attributes help us with those flexibilities, right? There are hundreds and hundreds of attributes which help in ease, which kind of provide ease of programmability. But there is one attribute that we use frequently. We will be using her. So attributes are basically used to retrieve information about some entity, about some input, right? For example, just to make it clear, here what an actual attribute is. Suppose I make a statement, signal, let's say A, it has a type std logic vector, let's suppose 7 down to 0, means 8 बिट का ये सिग्नल है. ठीक है, अब इस सिग्नल में कुछ इन्फॉर्मेशन है. Like one information is that it is an 8-bit vector. Another information is कि इसकी जो indexing है, it starts from A7 right up to A0. So higher index is 7, lower index is 0. ठीक है, अगर आप इसकी रेंज की बात की करेंगे, इसका जो रेंज है it is 7 to 0. ठीक है, now these are the informations which you sometimes require when you write the code. For example, आपको for loop use करना है और you have to put a condition if, you can use these attributes there. For example, इस case में if I use the attribute signal name is A, then we put a single colon या whatever you call it, hyphen, then I use the attribute low. This will return me a value of lower index. ठीक है, which in this case is 0. तो इस case में a dash low it actually means is 0. So low is an attribute that returns lower array index, which in this case is 0. Similarly, if I use a, this hyphen, yeah, single quote, whatever you call it, not HIGH, it will return a value of 7. So this means high attribute returns upper array index. Similarly, there are so many. If there is left, a left, this case में because it is 7 down to 0, it will return a value of 7, which means left returns the left array index. इसी तरह right, इसी तरह if I use this a range, it will return the range of this, which is basically because we have defined it from 7 down to 0, so range जो होगा it will be 7 down to 0. And these help in programming whenever you write a VHDL code. So sometimes जैसे मैंने कहा if condition आपको लगानी है, for loop लगाना है जिसमें identifiers use होते हैं, you can use these attributes. But one attribute that we will be using frequently in our this circuit design is event. And this basically returns a true value when that event occurs. और जो आपका डिजिटल डिज़ाइन है, we have one important signal, one global signal, that is the clock signal. Clock signal usually ऐसा होता है, it is a periodic signal with some frequency.
और आजकल जो भी आपका प्रोसेसर डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन है, इट विल डेफिनेटली हैव अ क्लॉक. प्रोसेसर की बात कीजिए आप, अपने मोबाइल की बात कीजिए आप, क्लॉक, बिकॉज वी टेंड टू डिज़ाइन अवर सर्किट्स एज सिंक्रोनस सर्किट्स, तो उसमें क्लॉक इन्वॉल्व भी होगा. अब एक क्लॉक सिग्नल में देयर आर टू इवेंट्स. एक इवेंट ये है जब आप 0 से 1 जाते हैं, और दूसरा इवेंट ये है जब आप 1 से 0 आते हैं. And you can make your circuit respond to one of these events. So it becomes important whenever you are trying to write a VHDL code for such a circuit जिसमें clock involve हो रहा है, तो उस टाइम पे you should know how to write it. So typically जो हमारा एक स्टेटमेंट आप frequently देखेंगे जब हम sequential design में जाएंगे, we will be using this statement a lot. If फिर जो क्लॉक का आपका नाम होगा, लेट्स सपोज आई एम नेमिंग इट सी एल के इवेंट, देन एंड सी एल के इज इक्वल टू 1, देन सो दिस स्टेटमेंट टिपिकली रिप्रेजेंट्स दिस इवेंट. क्लॉक पे इवेंट हो रहा है. कौन सा इवेंट हो रहा है? जब क्लॉक गोज फ्रॉम 0 to 1, देन वी मेक अवर सर्किट रेस्पॉन्ड. जो भी आपका कंडीशन है, देन दिस इज इक्वल टू दिस, वो आप आके देखेंगे. बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट दैट विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली. या यू कैन डू द अदर वे अराउंड. इफ क्लॉक इवेंट एंड क्लॉक इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दिस इवेंट. आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज ट्रिगरिंग. सो वहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स में वी यूज़ दिस अ लॉट. So please remember this. This we won't be using, but this event will be frequently using. It is an attribute, and it basically returns a true when that event actually occurs. Okay. So up to now we have covered all the preliminary जो हमें चाहिए. We have missed some things. मैं यहाँ पे थोड़ा mention कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हमने miss की, मतलब and if you are interested, I will be sharing the PDF of the book. आप वो चीज़ें देख सकती हैं. One of the important in this sense from a language perspective जो हमने यहाँ पे cover नहीं किया, because we won't be requiring that in the project, is the concept of arrays. VHDL does support array. It has a limited support for array because it becomes difficult to have a hardware perspective, or how we will hardware perspective में आप कैसे array को arrange करेंगे, but it does provide some minimum support. So I will encourage to have a look how arrays are defined. इसी तरह हमने data types पढ़े थे. So we have already defined data types जो हमारे inbuilt data types है. But we also have user defined data types जहाँ पे user अपना खुद का type बना सकता है. उसमें there is an important statement that goes by the name type. Again, this is something for your own knowledge, for your in-depth analysis of VHDL, you should look through. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट इफ़ यू गेट सम टाइम, विच यू शुड, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है, हैव अ लुक एट एरेज, हैव अ लुक एट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. टेक इट एज अ स्मॉल असाइनमेंट, खुद आप देख लो. although we won't be requiring in our project, but if you know these things, it's always an add-on. Okay? So apart from that, we have covered few. Now we'll do some examples. तो जितना जितना हम examples करते जाएंगे, तो उतना you will get used to the language, and later on we'll be using these codes in our actual software, and hopefully you will gain intuitions about the VHDL, and you will be able to write codes for your projects, for your respective projects. Okay, I'm ending the video. Thanks.